everyone. Let me welcome you all to the second episode of this TNP Talks playlist. Today we have among us a very good friend of mine, Subiksha from NIT Patna. Hi Subiksha, how are you? Hello, Sally. I'm very fine. How are you? I'm good too. तो फर्स्ट टाइम एट प्लेसमेंट बडीज कैसा लग रहा है? It feels amazing. It's my first time getting interviewed by someone else, apart from the placement Right, interview, of course. Yeah. right. It So, feels guys, I must mention Subiksha is a very talented girl. She is placed at Elstom and one of the most hardworking placement coordinators of her college. So, Subiksha, since you are from NIT Patna, so the first question I wanted to ask you is how is life at NIT Patna? How does it feel? NIT Patna में पढ़ के कैसा लगता है आपको? I mean, firstly, NITian होने का गर्व तो होता ही है. I mean, Right. it is a great place to be. It is one of the very oldest colleges of India. It is, I think, if I'm right, it's the fifth ever oldest engineering college of entire country. Right. Both of our it's been still the authenticity of the college is still maintained in its architecture and everything. So yeah, the life at NIT Patna is very awesome. We have a really small college, which is a very distinctive feature by area, and we also have the guard next by. Considering all the aesthetics of the college, it's a really great place to be, and even the infrastructure, the teachers are really developing year by year, and it's a great place to be. And the most important thing about the college is the networking and the kind of people you get to meet here all Right. around the world, learning new cultures and languages. I myself am from Tamil Nadu, and it's a very long way, a long distance in between. And just like me, there are a lot of people there. It is a really excellent place to be, and I have heard from my seniors, and I myself am graduating now. I can say it is one of the great places to learn if you want to learn mechanical engineering and civil engineering, to be honest. सो सुभिक्षा, ये तो हुआ आपके बारे में, लाइक आपकी कॉलेज के बारे में आपने बताया. सो वी नीड टू नो अबाउट यू एज वेल, राइट? मेरे को तो पता है कि सुभिक्षा इज़ अ वेरी गुड ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर. शी इज़ अ वेरी टैलेंटेड गर्ल एज वेल. बट हमारे व्यूअर्स के लिए एक छोटा सा इंट्रो आपकी. Yeah, sure. As you, Saleh, already said, I am Subiksha, and for the past year, I have been serving as the training and placement coordinator for mechanical engineering batch of 2021 at Training and Placement Cell NIT Patna. And apart from being a training and placement coordinator, I'm also a part of SAE club of our college. And along with that, I'm also a part of ECEL and the college editorial board, which oversees the cultural fest and technical fest of the college, which technically means I'm the writing girl for the entire college. And apart from college, also I've taken up a lot of freelancing works and internships in content writing and marketing and operations, SEO, etc., etc. And currently, I am also interning at Alstom, and I'll soon be joining as a GET in Alstom itself. And I think that's pretty much about myself. Congratulations on your internship and your offer also, Subiksha. So very happy to know about that. And one more thing, you are from mechanical, right? So girls in mechanical engineering department in engineering colleges is a very rare thing. So उसका क्या perception है आपका उस चीज़ को लेके? जब मैं आई थी, I mean, things are really changing right now thanks to the reservation policies. But जब मैं आई थी तब तो मेरे क्लास में the class strength was 90 seats, and बस 2 लड़कियां थी, and I was one of it. Okay. Yeah, that time my family is a bit progressive. They didn't say no, but my distant relatives were, of course, very skeptical about it. लड़की है, why एक तो इतने दूर से और दूसरा मैकेनिकल क्यों ली है. I personally, I didn't have any ambitions or keep I mean, that kind of a craze. I mean, I did have a craze that mechanically lena hai. My list for the dosas were full of just mechanical courses. The reason I chose mechanical was I knew I had a thing for it, and the other engineering courses didn't really make me feel a spark for it. I think that's why I chose it. I didn't have any solid reason behind it. But once I started attending the classes, I didn't have any regrets at all. I was even more confident that I chose the right thing. I think it depends on person and person, and gender doesn't really have anything to do with it.
it was maybe in the past that we associated mechanical engineering more with Hathoda and all those things. Right. But in this year, nobody ever goes to the, after 4 years, nobody goes to the workshop and does all the handling of the work. Hmm. So yes, gender is no restricting to any type of engineering courses, and today the scene has drastically changed compared to the time I entered. Right. So it is all about interest, right? So, yeah. Exactly. What you feel like, if you think you want to do this, then choose it, irrespective of where you're from, what your gender is, or anything. So let us now come to the training and placement thing. What made you join the training and placement cell, or from where did you get the motivation to join it? To be honest, over the 3 years, I never imagined myself in the placement cell. I wanted to do, I mean, over the 3 years, I knew मुझे SAE में जाना है, मुझे E-cell में जाना है, मुझे content लिखना पसंद है. But all of a sudden, towards the end of my third year, that was a time when people actually started getting anxious about placement. अरे placement तब तक किसी को इस बात का फर्क नहीं था, हम बस कॉलेज एंजॉय करने आए थे, एंजॉय कर रहे थे. और थर्ड ईयर का एंड में दैट वाज द टाइम व्हेन नॉट मी, इट वाज ऑल माय फ्रेंड्स एंड माय क्लासमेट्स हु वर सेइंग कि हमारे क्लास से अगर एक प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर आएगा तो उसे शिक्षा ही होगी. लाइक इट वाज सम रिटन रूल. It was actually surprising and shocking for me, but the sense of hope and responsibility that was on me, and the hope that was on the other people, that was the sole reason I ever gave the interview for being a placement coordinator. Right. And I gave the interview and I got the role. That's how it all happened. So student support, या जैसे कि आपने बताया कि the class was, you know, it was decided in the class that अपने क्लास से कोई placement coordinator बनेगी तो that has to be सुभिक्षा. सो वो चीज़ आपके लिए कितना मैटर करता है, लाइफ में कितना सपोर्ट या स्टूडेंट्स की मोटिवेशन या अपने जो बैचमेट्स हैं उनकी सपोर्ट कितना मैटर करता है आपके लिए? बहुत, I mean, आज मैं जो भी हूँ, it's of course because of the batch of 2021, that too especially my class. As I already said, the emotional aspects were too much. एक तो मैं घर से इतनी दूर कभी गई ही नहीं थी और इतनी दूर आई हूँ और मैकेनिकल में हूँ. ऑल्दो मैं इतना बताती हूँ कि जेंडर मैटर नहीं करता. दो लड़कियां, अगर 80 लड़के हैं और 2 ही लड़कियां हैं क्लास में, ऑफ कोर्स इट इज a very hostile environment for a lot of people. पर एकदम से वो feel never made me feel that. It was such an emotional bonding with all of them, and once they started trusting me, I had to do everything that I can to fulfill their needs of their placement. Or of course, training and since you're a placement coordinator yourself, you know what a stressful job it is. You work over the hours, even the night and the day, और सबको मैनेज HRs को, स्टूडेंट्स को और कॉलेज मैनेजमेंट को भी. और ये सब हो ही नहीं पाएगा अगर स्टूडेंट्स का सपोर्ट नहीं मिलता है तो. So of course, student support and the classmate love the classmates have on us has a really great role to play. What changes do you see in yourself after becoming a TNP coordinator and after getting into this position? How has life changed? A lot has changed. As I said, पहले 3 साल बस ये था कि मजे करेंगे, मस्ती करेंगे, साथ साथ में सेल्फ डेवलपमेंट के लिए कुछ करें. It was all a friendship का relationships and the fun part of college, along with of course a lot of development stuff. But once you're in the 4th year, it is more like a pre-corporate के पहले आप जो demo जैसा देख रहे हैं, that will be my placement coordinator tenure. So the main thing that I saw was me getting more professional towards my very own classmates itself. क्योंकि आपको कई बार you have to face a lot of hardships which will come in the future, but sometimes वो जो recruit करने आते हैं, they have their own feelings. और कभी कभी मैकेनिकल को लोग क्राइटेरिया में रख देते हैं कि बस कुछ डिपार्टमेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं. इसकी वजह से I'll have to the confronting your classmates about why they are not eligible to appear for the company. Right. Those are like really hard things to. और as a person, I think this has developed me a lot because जब आपको खुद के classmates के साथ you'll have to confront these things or try to be professional. I think he's really changed me a lot. Right. So सुभिक्षा, जैसे कि आपने बताया कि some companies which comes for the recruitment
they do not allow mechanical, they just go for the CSIT stuffs. Okay, so being a mechanicals coordinator, how how much it is difficult for you to convince those companies for making your branch eligible, और कैसे कैसे problems आपको face करना पड़ा है for having less opportunities in mechanical as compared to CSIT or EC branches. Yeah, definitely that is a really big, वो भी ऐसे पैंडमिक, हमारे सारे आंसर्स इसी पे डिपेंड करता है क्योंकि इस साल बहुत सब कुछ अलग था। एक तो पैंडमिक है और ऑफ कोर्स ऑन कैंपस के अलावा कोर ब्रांचेस के लिए बहुत बहुत मीगर अपॉर्चुनिटीज होते हैं ऑफ कैंपस में। तो जो ऑन कैंपस में कंपनीज आते हैं, हमारा लाइक इट इज अ ह्यूज नेसेसिटी दैट हम उन लोगों को कन्विंस करें कि मैकेनिकल को भी एक चांस दे टू अपीयर फॉर देयर रिक्रूटमेंट प्रोसेस। बट इन द मोस्ट केसेस इट डज नॉट हैपन बिकॉज कंपनीज के उनके खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। दे आर देयर, आखिर उनको ही रिक्रूट करना है, सो दे नो व्हाट काइंड ऑफ एम्प्लॉयज दे वांट employee with a BTech in CS or IT, so that's what they want it to be. बहुत मुश्किल होता ही है and a lot of people, most people do not even agree. और एक तो ये भी है कि हमारे कॉलेज में स्टूडेंट्स की तरफ से भी they were not very eager to sit for CS companies. क्योंकि कोर के जो बच्चे होते हैं मेरे जैसे सब होते हैं कि मैकेनिकल ही हैं तो मैकेनिकल में ही काम करेंगे। It is a very small percentage that who involved, बट जो फाइट हम कर रहे हैं HR से कि मैकेनिकल को भी एक चांस दो, इट इज फॉर द 10% ऑफ द क्लास हु इज इंटरेस्टेड इन कोडिंग एंड वांट अ गुड पैकेज और वांट अ जॉब एट एनी कॉस्ट, चाहे वो कोर हो या IT हो। ऐसे भी कुछ बच्चे होते हैं जिनको जॉब की बहुत ज्यादा नेसेसिटी है। सो या दूसरे दोनों तरह से हमको बहुत मुश्किल है। हम कभी मुश्किल से कन्विंस कर भी लेते हैं कंपनी को और पार्टिसिपेंट्स कम हो जाते हैं, तो इट इज अ वेरी एम्बैरेसिंग सिचुएशन। सो या सब कुछ फिर हमारे ऊपर ही आ जाते हो वापस। एग्जैक्टली। तो जैसे कि आपने पेंडेमिक के बारे में बताया था, सो आई जस्ट वांटेड टू आस्क कि हाउ इज दिस वर्चुअल ड्राइव्स आर डिफरेंट फ्रॉम द फिजिकल वंस। जो पहले हमारे सीनियर लोग फिजिकली ड्राइव कराते थे कॉलेज में, लेकिन नाउ ड्यू टू द पेंडेमिक अभी सब कुछ वर्चुअल हो चुका है। सो वर्चुअल होने की वजह से क्या क्या डिफिकल्टीज आपको फेस करना पड़ा स्टूडेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट करने में? सो बिट अबाउट दैट। या आई मीन एवरीथिंग वाज डिफिकल्ट। पहले यही रीजन था कि कोई पायनियर्स नहीं थे, मतलब कोई एडवाइस देने वाला नहीं था। इट वाज टोटली डिफरेंट। एवरी टाइम यू गो टू अ सीनियर फॉर एडवाइस, वो लोग बस जो वो लोग फेस करेंगे, पर हमारे टाइम में वो कुछ भी नहीं था। इवन द क्वेश्चन पैटर्न सब, ऑफ कोर्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट तो पहले भी था, पर वो भी घर बैठ के देने में आधे लोग के पास लैपटॉप भी नहीं था। इट वाज फ्रॉम दोस टाइम्स वी हैड लैपटॉप होता तो ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ आवर क्लासमेट्स आर फ्रॉम द rural regions of Bihar and Uttar Pradesh, which are really lacking in the infrastructure of related to the internet facilities. और उस हिसाब से और ये सब छोड़ के भी there are a lot of students who do not know how to operate these new apps like Zoom and Microsoft Teams. Microsoft Teams तो college सिखा दिया जैसे भी करके, पर lot of these websites that use the test वो बहुत ज़्यादा ही नया था सबके लिए। It was really difficult। पहले बच्चे का छोड़ो, हमारे लिए खुद के भी Exactly, हमको पहले सीखना पड़ता था माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, पहले हम लोगों को सीखना पड़ता था, फिर जाके बच्चों को सिखाना पड़ता था। फिर एग्जैक्टली जब बच्चे को टेस्ट देने में दिक्कत हो रहा है, जब हम वो टेस्ट दे ही नहीं रहे हैं, हाउ डू यू सॉल्व इट। और ये सब एक तरफ, और कॉलेज के पास इतना ज्यादा फैसिलिटी नहीं था, और कॉलेज भी खुद एक गवर्नमेंट कॉलेज है, सो ऑफ कोर्स दे हैड अ लॉट ऑफ, पूरा डेटाबेस वर्चुअल करके सब सारा प्रोसेस चेंज करने में सबके लिए टाइम तो लगा था। पर हाँ, अराउंड 3 to 4 months थिंग्स बिकेम द न्यू नॉर्मल फॉर अस। बहुत मुश्किल। और इसके अलावा भी द मेन थिंग वाज कंपनीज नहीं आ रहे थे पहले 6 महीने के लिए। इट वाज एक्सेप्ट फॉर सम कंप्यूटर साइंस और कोडिंग रिलेटेड कंपनीज। ये सबसे ज्यादा ड्रॉबैक इसी वजह से था, और आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल द NITs faced this year that we have record low placements. We're trying our best to match it up to the previous levels or at least give one offer to all the students.
exactly. Or I think this is a really sad situation for all of us, which is out of control. But now that we are the pioneers, we are the first ones to do so. It falls upon our heads that we guide our juniors that उनका virtual placement drive में कोई दिक्कत ना हो. And that's राइट. सो जैसे कि आपने बताया था कि यू विल गाइड योर जूनियर्स टू गेट यूज टू एंड टू गेट accustomed to the virtual thing. So what should be some basic you should give some basic tips to your junior coordinators, right? So yeah, you can. Yeah, to all the junior coordinators, like always say, it is the first thing is it's not a light job or anything to add to your CV or just to do it because you got the opportunity to. It is a huge, huge responsibility. First, you should know your classmates, and there are a lot of them for whom, even though they don't tell you a job is a dire need. Right. हम सब NITians तो गवर्नमेंट कॉलेज से हैं, तो बहुत लोग का इकोनॉमिक सिचुएशन उतना अच्छा नहीं होगा. और it is for a lot of people they are the only earning member of the family और पहला जनरेशन होंगे जो कॉलेज तक पहुंचे हैं. और इस सब के से अलावा भी a job is an emotional connect to a lot of people and you are the person who is responsible for all of that. तो पहले सारे coordinators should have the sense of responsibility and a sort of selflessness. कभी भी इस जॉब में सेल्फिश नहीं होना है और ऑफ कोर्स इट इज अ पार्ट ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट नो चीटिंग एंड ऑल दिस बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स अ स्टेप अहेड. और उसके अलावा द सेकंड थिंग इज पैंडेमिक तो लग नहीं रहा है कि इस साल भी ऑफलाइन रिक्रूटमेंट होगा. इट विल बी अ वर्चुअल कैंपस ड्राइव फॉर अ लॉट ऑफ कॉलेजेस अगेन दिस ईयर and they should be ready for it. And the second thing, the third thing will be for not just the coordinators but for all the juniors in the 2022 batch will be to make their resumes. क्योंकि पहले बस इतना होता था कि बस इंटरव्यू में आप अपियर हो जाओ, टेस्ट वगैरह में स्कोर अच्छा करो, सीवी अच्छा बनाओ तो हो जाएगा आपका नौकरी. पर आजकल योर resume really matters in a virtual campus drive. So put more efforts into making your resume, not just the design aspects of it which I'm speaking of. It is आप एक साल से जो कर रहे हैं as in a pandemic, your internships, everything counts, all of it counts. So put extra effort into it. And the fourth thing would be, as I already said, job opportunities कम ही होंगे in a pandemic compared to the pre-pandemic times. Although it is the second wave और companies को आदत हो चुका है virtual campus drives का, बहुत कंपनीज अभी रिक्रूट करने में दे आर हेजिटेटिंग बिकॉज दे डोंट हैव गुड फाइनेंशियल कंडीशंस देमसेल्व्स. तो अपॉर्चुनिटीज बहुत कम होंगे. तो इसकी वजह से आई वुड से नॉट टू लेट गो ऑफ एनी अपॉर्चुनिटीज ये सोच के कि हम कोर में ही नौकरी लेंगे या हम कंसल्टिंग में ही नौकरी लेंगे. डू नॉट कॉम्प्रोमाइज और रेस्ट्रिक्ट योर अपॉर्चुनिटीज. जो आ रहे हैं उसमें यू ट्राई योर बेस्ट. Once you get the offer, then it's up to you to decide whether you want to pursue it as your dream job or not. Right. So yes, make use of the opportunities provided to you and try your best. Keep trying. It is a matter of consistency over the time. That's it. Yeah. So as you have served your college placement cell as a trainee and placement coordinator for the last 1 year or so, like what is the best and the worst thing of being in this position? Yeah, the best thing would be seeing your batchmates get placed because of you. Or I only take all the credits, of course, it's all because of them. But yeah, the best thing would be to see your batchmates and friends get placed. And the worst thing would be, yes, all the apart from all the night work and all the extra work. So the worst thing would be to see a lot of batchmates still not unplaced. That is, of course, the drawback as well. As I already said, a lot of people have a dire need of a job and they did not get it. And a lot of people do not even get to an opportunity to sit because of the criteria of some companies or even the placement committee itself. For some people it's a branch, for some people it's a matter of their class 10th or class 12th marks score. There are some really you can't confront your batchmate saying तुम 10th में 70% नहीं ले आया इसलिए तुमको इस कंपनी में बैठने नहीं मिल रहा है. That's It is really difficult and they ask, exactly, and they ask you कुछ हो सकता है क्या, and you're really helpless at that time. Exactly. That is one of the really worst things. Those are the times I also feel bad for being in this role and I also feel a sense of more responsibility on you.
व्हेन दे से कुछ हो सकता है क्या, दे इट्स लाइक कि मतलब वो लोग तुम पे एक विश्वास जता रहे हैं एंड दे आर believe that you can do something, but actually you cannot, because these criteria are actually made by the company. Student coordinator or the lead coordinator cannot do anything about it. So yeah, that moment it really feels bad and powerless, to be honest, right? So Subiksha, you have worked with a team, you have worked in a team of like 20 to 30 student coordinators, I guess. So how is teamwork important to you? Teammates ने आपको कैसे motivated रखा throughout the placement session for achieving a lot of success throughout? एज मच एज क्लासमेट्स का सपोर्ट जरूरी है उतना प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर्स का भी जरूरी है, बहुत ज्यादा है. एंड दिस टाइम इट वाज वेरी वेरी वियर्ड बिकॉज आई नेवर सॉ ऑल द 20 एट वन प्लेस. At one, एक साल right? से या and yeah, half of them I only got to know during the placement sessions. The only the other half are my friends. But yeah, during the placement drive, everyone together coordinated, and especially जब मैं खुद एग्जाम देती हूँ रिक्रूटमेंट का, तब मैं अपना क्लास का संभाल नहीं पाती हूँ, तो तब they stepped in for me and I cover up for them. This was a really great bonding for each other. मैं अभी भी कहती हूँ उनके बिना लाइक मेरा नौकरी नहीं लगता, क्योंकि जब मेरा टेस्ट हो रहा था वो लोग इतना ज्यादा कॉशियस थे कि मेरा दिमाग में कोई स्ट्रेस ना रहे. Right. And all this, and I do the same for them, and it's been a really awesome thing because अकेले हम कुछ कर नहीं सकते. Of course teamwork is what matters the most, and especially पैंडेमिक टाइम में हम एक दूसरे से मिले भी नहीं, फिर भी हम एक दूसरे के लिए इतना कुछ कर रहे हैं और अभी एक साथ कर रहे हैं. We of course a lot of things like अरे एक कंपनी ऐसे कर दिया और एक बैचमेट ने ऐसे कर दिया. These things you can't tell anyone, not even your batchmates. Right. It is only this close group of people that you can share your everything, and they also understand. So it really matters, and I really want to thank them all since I never got an opportunity to even meet them. Right. That is why they keep saying that alone we can do so little and together we can do so much. Yeah, that is quite justified. So Subiksha, before wrapping it up, final tips for our students or our viewers, like जो अभी second year third year में हैं and जिनका placement session will be is going to start within a month, or जो second year है उनका तो एक साल बाद start हो जाएगा. So some tips for them, कैसे placements के लिए prepare करें, कैसे अपने TNPs के साथ like coordinate करें, या क्या उनके future के लिए क्या क्या करना सही रहेगा. So tip. Yeah, sure. So to all the juniors out here watching this, be it batch of 2022 or batch of 2023 or even batch of 2024 or in their first years. आजकल first years के बच्चे भी they are like really anxious about placements, although they shouldn't be. So firstly, for everyone, don't be anxious about placements at all, because anxiety never helps. And the other things would be confident. That will be the only thing that will make you out of it, because हर क्लास में there are around 90 people, और हर कंपनी के लिए around there are 400 to 500 participants, और आखिर सिलेक्शन बस 5-10 का होता है. This it's not a matter of for you to be anxious. ये बस इसीलिए क्योंकि वो लोग कॉन्फिडेंस को ही ज्यादा देखते हैं, क्योंकि आप सब लोग 500 लोग एक ही कॉलेज में पढ़े, एक ही टीचर से पढ़े, एक ही ग्रेडिंग सिस्टम में सबका CGPA आया है. But what matters is your confidence level, and secondly your internships. Focus more. If you're in your second year, start doing internships, and if you can't get an internship, even make a small project of your own. If you're from CSN, IT or EC, it's really very easy. और अगर आप मैकेनिकल या सिविल से हैं या कोर ब्रांचेस से, फिर भी there are lot of opportunities nowadays जो वर्क फ्रॉम होम में हो जाता है या कंप्यूटर से ही हो जाता है. और जब ये लॉकडाउन सब खुले, you can also aim for internship side by side. Or the next thing would be to make a resume, and I can't stress on it enough. It will really matter not only in an अभी फिलहाल के लिए वर्चुअल कैंपस प्लेसमेंट्स में बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद भी आपको हमेशा के लिए काम आएगा if you know how to make a good resume. And the next would be to virtual placement हमारा नॉर्मल तरीका काम नहीं करेगा, जैसे कि how well you dress, how well you sit, तो ये सब काम नहीं करेगा. You can't do any जुगाड़. The only thing that matters is how well you present yourself with your words. So focus more on your communication skills, जो कि बहुत ज़्यादा ही लैक कर रहा है बहुत students में. This I have noticed being a placement coordinator.
वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि आपको टेक्निकल स्किल से भी ज़्यादा ही ये काम आएगा इन अ वर्चुअल सिनेरियो. And then last thing would be networking. I wouldn't say कैंपस प्लेसमेंट में काम आएगा, पर अगर बाय एनी मीन्स आपको वर्चुअल प्लेसमेंट्स में कैंपस प्लेसमेंट्स में आपका लक साथ नहीं दिया, तो इट विल रियली मैटर ऑन द टाइप ऑफ पीपल यू नो एंड द टाइप ऑफ ब्रांड इमेज यू हैव ऑनलाइन or offline also, be it your relatives or friends. Know a lot of people, help a lot of people, and in return it might help you sometimes. I even know a lot of juniors जिनको ऑन कैंपस प्लेसमेंट शुरू होते कि पहले ही they got placed in they got internships in a lot of big four companies just because of their networking. So yeah, seek out for the opportunities beyond your on campus placements as well. That would be my last and vital advice for everyone. Do not take networking lightly. It really does matter. Be it even if you're from any year or even if you're a pass out, it is never too late to start networking. That's it. थैंक्स अ लॉट सुभिक्षा. गाइज आई मस्ट से कि शी इज़, जैसे उसने नेटवर्किंग के बारे में बात किया अभी, शी इज़ वेरी एक्टिव लिंक्डइन में, ठीक है. एंड अपार्ट फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड you know being a placement coordinator, Subiksha also knows how to connect with people. Like, she is very friendly and talkative, so this actually really helps. To be very honest, this actually helps. So note down her advice, because Subiksha अगर कोई advice देती है तो that is going to be very important for you, I must say. So thanks a lot again. We have to wrap it up right now. Thanks a lot for your time. And guys, अगर आपको सुभिक्षा से कुछ भी पूछना है, then I'll post her लिंक्डइन का वो जो लिंक है, और या फिर इंस्टाग्राम लिंक जो भी है, यू नो यू गाइस कैन कनेक्ट विद हर. सो थैंक्स अ लॉट सुभिक्षा फॉर बीइंग ऑन चैनल. एंड सो गाइस, आई विल रैप इट अप हियर. मिलते हैं अगले एपिसोड पे. बाय. सो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि वी हैड सुभिक्षा फ्रॉम NIT पटना इन आवर चैनल. सो बिल्कुल ऐसे ही हर संडे को एक एक एपिसोड आएगा TNP टॉक्स की सीरीज़ या प्लेलिस्ट में. वी विल हैव TNP कोऑर्डिनेटर्स फ्रॉम NIT Agartala और फ्रॉम अदर NITs, those who will share their experiences. And guys, mind you, these experiences are going to be very much helpful for you all, especially those who are studying in their second and third year of engineering colleges. These experiences are going to be very much useful for you all. So keep watching the TNP Talks series. And also watch the other playlist of our Placement Buddies channel. जो Let's Hear from the Experienced वाला playlist है, there we'll have people who are placed in different companies and they will share their own experiences. Sunday को आप लोगों को TNPs लोगों से सुनने को मिलेगा. So yeah, this channel is going to be very much useful for you all. So keep sharing the videos, keep subscribing to our channel, and like and comment also. If you have any doubts to ask, to the creators of Placement Buddies, if you have any doubts to ask to the guests of our Placement Buddies, please let us know by commenting below. Okay, so thank you जुड़े रहने के लिए पूरा वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत शुक्रिया. मिलते हैं अगले एपिसोड पे. थैंक्स. बाय.